everyone. Once again, welcome in the journey of learning business analysis with Muhammad Afzal. And today I'm going to let you know what are the common contents of BRD and how you can create the content table, which is really important for creating any formal document as a business analyst. Why table of content is so important? Let me explain you why is it. Let me show you as why exactly table of content is. So this is called the table of content of the topics which are going to be in your document. Whether it's your scope document, whether it's gonna be your BRD, FRD, doesn't matter. If you are creating a formal document and you are about to share it with the people, then it's important to have a table of content like this. And once we click on this, we could navigate to that particular topic. So this is the only main function of table of content that helps you to navigate directly to the topic without scrolling to the page. That saves a lot of time, especially when you are creating a document like of 400 pages, of 800 pages, and like 250 pages. It's really important to have this functionality in your document that will help you as well as your client to navigate to a particular or certain topic. Okay, so how we can create it? Let me explain you how. Okay. So here I have created documents of BRD, and what now I'm going to do is let me show it to you. Just give me a minute. All right. So now what I'm gonna do is I have created some contents here. So the first thing, you should have content to create any like what to say scope or content table. Okay. So what I'm gonna do is I'm gonna like this introduction. I'll go on this page. I'll paste it here, okay, and I'll make this as heading. To make it heading is really important. If you're not making it heading, you cannot create a table of content. So remember, the first thing is to create the headings. Headings are important for creating the content table. So what I did, I write down the heading. I selected the heading part, and now it became the heading, and now I'm gonna give some bullet points here. So now it's one. Again, I'll go on this page. I'll select this part. I'll come here. I'll paste it here, and here the second heading is. Again, I'm gonna do the same thing. I'm gonna copy this, and I'm gonna paste it. It's the second heading. Like the first main heading is introduction. There are two parts, one purpose of the document and the other is project overview. Now we will come on the second topic, that is business objective of BRD. Okay, so now here it is one and here it is one. So it's gonna make difficult. So what we are going to do is we are going to do format painting and we will make it like, just give me a minute. Let me do this as this. Oh, sorry. Here it is. Okay. This is what you have to do is you have to make the headings and then only you can create the table of content. So now coming to this document, if I delete this, you can check it. If I delete this table of content, now there is no table of content in this scope document, right? You can check it. There is no table of content. But what is there is headings. These are headings. The way I was doing here, I was making the headings. It's gonna take time. So I'm just moving to the document which is already prepared. तो उसी तरह से आपको यहाँ पे
डॉक्यूमेंट मतलब हेडिंग्स बना लेना है इस जगह से। जब आप हेडिंग्स बना लेते हो, इस तरह से सारे हेडिंग्स बने हुए हैं यहाँ पर, तब आपको क्या करना होता है, इट्स रियली सिंपल। आपको फिर यहाँ पर जाना है सर्च पे, एंड यू हैव टू राइट टेबल ऑफ कंटेंट, एंड ये पहले ही आ जाएगा, ठीक है। यहाँ से आपको टेबल ऑफ कंटेंट जो सा भी फॉर्मेट आपको अच्छा लग रहा है वो फॉर्मेट आप उठा लो। सपोज मुझे ये फॉर्मेट अच्छा लग रहा है, आई सिलेक्टेड दिस, ओके। एंड नाउ सी द मैजिक, हियर वी हैव द टेबल ऑफ कंटेंट created without any effort, and it is clickable. Let me show you again. सबसे पहले आपको क्या करना है, जो भी टॉपिक्स है उसको लिखनी है और उसको हेडिंग बनाना है। हेडिंग में फिर फर्स्ट हेडिंग, सेकेंड हेडिंग, थर्ड हेडिंग, इस तरह से आता है। जो आप टैब दबाओगे तो ये वाला पोर्शन, जैसे मैं इसे सिलेक्ट करता हूँ और शिफ्ट के साथ अगर मैं टैब दबाता हूँ तो ये बैक आ जाना चाहिए, बट अनफॉर्चुनेटली ये ऑन हो जा रहा है स्क्रीन। तो कोई बात नहीं, आप शिफ्ट के साथ जब दबाओगे बटन तो देखो यहाँ पे ये बैक आ जाता है। और जब शिफ्ट के साथ टैब दबाओगे तो ये लेफ्ट साइड आ जाता है, मेन हेडिंग बन जाता है। जैसे टैब दबाते हो तो ये फिर सेकेंड हेडिंग बन जाएगा, लाइक दिस। शिफ्ट के साथ दबाओगे फर्स्ट हेडिंग, शिफ्ट के बाद तो सेकेंड हेडिंग। तो इस तरह से सबसे पहले आपको हेडिंग्स दे देना है। टॉपिक लिखने से पहले भी आपको क्या करना है, आपको हेडिंग्स दे देना है। ये सारे हेडिंग्स आपको क्रिएट कर लेने हैं यहाँ से। हेडिंग्स क्रिएट करने के बाद सारा काम हो जाता है। फिर आपको क्या करना है, यहाँ पे टेबल ऑफ कंटेंट लिखना है। ये आ जाएगा, जो फॉर्मेट आपको पसंद आओ वो वाला फॉर्मेट आप उठाओ, उस पर क्लिक कर दो और ये आपका टेबल ऑफ कंटेंट रेडी। इट्स एज सिंपल एज, ओके। अब यहाँ पे अगर आपने कुछ चेंजेस किया है, सपोज आप ये वाला पार्ट ले जा रहे हो नीचे, सपोज मैं मानता हूँ कि ये हम लोग ले जा रहे हैं इंट्रोडक्शन वाला पार्ट, प्रोजेक्ट ओवरव्यू, इसे हम फिर से कर लेते हैं। प्रोजेक्ट ओवरव्यू की जगह पे नहीं करना है हमें, तो फिर सेलेक्टेड, ठीक है। तो ये हेडिंग्स बन जाएगी। हेडिंग्स बनने के बाद आपको क्या करना है, टेबल ऑफ कंटेंट में जाना है। टेबल ऑफ कंटेंट पे जाके आपको सिलेक्ट करना, पर उससे पहले आप देख लेना यहाँ पर मतलब टॉप पे हो आपका कर्सर, और उसके बाद आप यहाँ पर जाओ। यहाँ पे जाने के बाद ये सिलेक्ट करो और ये आपका टेबल ऑफ कंटेंट बनकर तैयार है। अब हम लोग क्या करते हैं कि जो टेबल ऑफ कंटेंट हमारा बना है, इसे हम देखते हैं। ये जो प्रोजेक्ट ओवरव्यू अभी पेज नंबर 1 पे है, प्रोजेक्ट नेम वगैरह, हम लोग इसको चेंज करते हैं, देखते हैं क्या टेबल ऑफ कंटेंट में चेंजेस आती है क्या। तो हम लोग यहाँ से इंट्रोडक्शन अपना उठाते हैं और इंट्रोडक्शन वाले पार्ट को हम यहाँ से कट कर देते हैं। और एक बार हम लोग अपडेट करके देखते हैं कि क्या हमारा कंटेंट ऑफ टेबल अपडेट हो रहा है। तो अब अपडेट हो गया, यहाँ से ऑब्जेक्ट इंट्रोडक्शन वाला पार्ट हट गया है। अब ये इंट्रोडक्शन वाला पार्ट पहले पेज नंबर 1 पे था, अब इसे हम यहाँ पेज नंबर 7 पे पेस्ट कर रहे हैं। अब देखते हैं हम लोग, फिर हम लोग यहाँ पर आएंगे, क्लिक करेंगे। जैसे कंटेंट पे क्लिक करेंगे अपडेट टेबल आ जाएगा। देन वी हैव टू क्लिक इट। यहाँ पे जैसे ही क्लिक करेंगे, यहाँ पे अपडेट इंटायर टेबल पे क्लिक करें। अब देखो इंटायर टेबल जब अपने अपडेट किया है, इंट्रोडक्शन वाला पार्ट जहाँ पे प्रोजेक्ट ओवरव्यू वो वहाँ पे आ गया। तो ये काम होता है, आपको ये मैनुअली नहीं करना होता है, और अब आप जहाँ पर भी क्लिक करो आप डायरेक्टली उस पार्टिकुलर टॉपिक पे पहुँच जाते हो। तो ये इसका फायदा होता है कि जब आप टेबल ऑफ कंटेंट बनाकर रखते हो तो आपको बड़े बड़े डॉक्यूमेंट जब 250 300 पेज